वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन. This is about the scientist Chandrasekhar Venkat Raman. वैज्ञानिक चेतना के वाहक means वैज्ञानिक means a scientist who who found out the different things, who was interested in finding out new inventions. Was written by Dhiranjan Malve. He's the writer of this story, this chapter. वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन. पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे. Means when the apple falls down from a tree, the people were seeing it from so many years. मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझा नहीं पाया. But the reason of the apple falling from the tree का रहस्य means the secret. न्यूटन से पहले, बिफोर न्यूटन, कोई और समझ नहीं पाया था. Nobody understood this secret. ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे. Similarly, उसी प्रकार similarly, विराट समुद्र means the big sea, the big ocean, की नील वर्णीय आभा means the blue color of the ocean को भी असंख्य लोग, इनन्यूमरेबल, अनकाउंटेबल लोग, अनकाउंटेबल पीपल, आदिकाल मीन्स फ्रॉम द वेरी एंशिएंट टाइम्स, देखते आ रहे थे. दे वर सीइंग. मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन. Now, like finding out about this, the reason being, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य means on this the reflection on the ocean of this blue color reflection on the ocean, this secret, the के पर्दे means a curtain just means unveiling, पर्दे को हटाना means unveiling the truth. who did it? हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन. He was the one who unveiled the secret behind this, the reflection of the ocean, the blue color on the ocean. Now, why? Like, who was Chandrasekhar Venkat Raman? बात सन 1921 की है. It is the time 1921. जब रामन समुद्री यात्रा पर थे. When Raman was on the ocean voyage. जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना. On the deck of the ship deck, he used to stand and see the blue color ocean. प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था. Raman was a nature lover, and he liked to see the ocean from the ship deck. वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते. The reflection of the ocean, of the blue color reflection of the ocean, he used to stand there and like just look at it. खोए रहना means he was lost always on seeing this reflection. लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे. But now Raman was not only a nature's lover, a fear, like a bhavuk means an emotional nature's lover. It's not only that. उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी. Inside him, the scientist curiosity was always there. यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी. This curiosity asked him a question. आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? Now, why is the ocean's color is only blue? कुछ और क्यों नहीं? Why not something else? रामन सवाल के जवाब ढूंढने में लग गए. Now, Raman was started searching the answer for this question, that why the ocean was always blue. जवाब ढूंढते ही वे विख्यात बन गए. Now, as soon as he found the answer, he became very famous.
रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था. Now Raman was born on 7 November 1888 in Tamil Nadu, Tiruchirappalli town. uh, town. इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे. His father was in Visakhapatnam. He was the teacher of. इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे. Means in his father was a maths and a physics teacher in Visakhapatnam. पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे. His father used to teach him from childhood only. बचपन means childhood. Teach him maths and physics पढ़ाते थे. इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी. It would be something unusual to say, something exaggeration. It is not an exaggeration that in these two subjects which he was very famous on, Venkataraman, his foundation was kept by his father. His father was the one who was his teacher from the beginning. कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंट्स कॉलेज मद्रास से की. BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी ऊंचे अंक हासिल किए. Now college, he went to college in ABN college Tiruchirappalli and also and then President's College, Madras. In BA and MA, he in both of these exams he had taken the highest rank numbers. रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन था. रामन का मस्तिष्क मीन्स द रामन्स ब्रेन विज्ञान के रहस्यों में साइंटिफिक सीक्रेट्स to solve them. बचपन से ही बेचैन था. He was always curious, always restless from childhood to solve the scientific problems. अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया. From the college time only, he always used to take part in the research. शोध कार्यों में दिलचस्पी means doing research work. He was always interested. दिलचस्पी लेना means interested. शुरू कर दिया था. He started. उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ. His first research newsletter, it was printed in philosophical magazine. प्रकाशित हुआ means printed. उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दे. His heartful wish was that he wanted to give his life to research. समर्पित करना means to just sacrifice his life for research work. मगर उन दिनों शोध कार्यों को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी. But in that time, research work, taking it as a career, it was not at all. There was no such arrangements for them. खास व्यवस्था नहीं थी. There was no such opportunities at that time. प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे. Most of the students, they were always attracted towards government jobs. The सरकारी नौकरी means government jobs. रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए. Raman also, like his fellow students, fellow classmates, he also took a career in the government job and with the Vibhag, which is in the finance department, he became an officer. उनकी तैनाती कोलकाता में हुई. He was appointed in Kolkata. कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा. But even when he was working in the government job, still his
nature and what he was interested in, Swabhavik, means his he was that curious kind of a nature, no? So that he continued in even if he was in the government job. दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहु बाजार आते जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी. And from the job, he used to come to the one market, Bahu Bazar, and then he used to visit Indian Association for the Cultivation of Science ki and प्रयोगशाला means the laboratory was there. So he used to visit that. यह अपने आप में एक अनूठी संस्थान थी. It was a very unique organization जिसे कलकत्ता में एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था. Which was established by Dr. Mahendra Lal Sarkar in Calcutta. And with lot of hard work, with years of hard work, he had established that organization. Dr. Mahendra Lal Sarkar किया था. इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना. द goal of this organization was to increase the science, make its scientific progress. अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था. It has a lot, the goal was very high, but it did not have the means. It was to continue the experiments and to make the research. रामन इस संस्था की प्रयोगशाला की काम चलाऊ उपकरणों के का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते. When he went to this laboratory, he used to use the Kamchala उपकरण means just very ordinary things were present there, and with that only he used to do his research work. यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था. It was like very determined and adamant for scientific research. That it was an udaharan means it was an example of a very adhunik means the modern scientific research example. जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान का समृद्ध बनाने का प्रयास करता. This was a very great example of a person from a normal office, after his office time, hard working in the office and then going to the market area and going to this ordinary laboratory, मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता. he would reach the ordinary laboratory and अपनी इच्छा शक्ति के जोर से and his wishful curiosity भौतिक विज्ञान in the physics को समृद्ध बनाने का प्रयास करता. He wanted to make a lot of research in the physics. Samriddha means to make it more obvious, more famous in the physics. He wanted to find out all different things in physics. उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकर्षित हुए. That time only he was attracted toward air transport. वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे. He was finding out the sounds about the sounds on the air vehicles. इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों के अध्ययन किए जिनमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे. उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकर्षित हुए. In that time only he got attracted towards the
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों के परतें खोलने के प्रयास कर रहे थे. He was finding out the reason behind the sounds of these musical instruments. इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया. And in that he many musical instrument he researched on, जिनमें देसी और विदेशी. The in that both the लोकल एंड द फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों प्रकारों के वाद्य यंत्र थे. बोथ टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे. वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चैलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए. In his research work, शोध कार्यों के दौरान, during the time of his research work, when he was studying about these musical instrument, in that he studied about violin, piano, like these kind of foreign instruments. वही वीणा, तानपुरा और मृदगम पर भी उन्होंने काम किया. And then still and also on he worked on veena, the musical instrument, tanpura, and also mridgam. He worked upon them also. These are the traditional, these are the local instruments. उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों के इस भ्रांति के को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है. Then he wanted to break that thinking, the break that norm, that the Indian musical instrument were useless in compared to the foreign instruments. Paschimi Desh means in the Western countries, is Bhranti means that there was a belief that the Indian musical instruments were useless as compared to their musical instruments. Then he tried to break that norm. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वाद्य यंत्र के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया. The sound, the movements of the musical instruments, behind that there was a math. He worked on that. और उनके शोध पत्र भी प्रकाशित किए. Then he also printed the newsletters. उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी के इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली. In of that times a very famous philosopher, a very famous teacher, of a very famous professor, he found his name was Ashutosh Mukherjee. He found out about this attractive young man called Raman के बारे में जानकारी मिली. He got the information about him. उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था. At that time, in the university, there was a new position, new vacancy for a professor had come up. मुखर्जी महोदय ने रामन को के समक्ष प्रस्ताव रखा. And Ashutosh Mukherjee called for Venkata Raman for this post, कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें. He told him to leave the government job and to join the Calcutta University, and he work as a professor over there. रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था. फॉर रामन इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे. दैट टाइम हिज गवर्नमेंट जॉब वॉज वेरी गुड एंड वेरी फेमस, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और उनके सुविधाएं जुड़ी हुई थी. विद दैट ही यूज्ड टू गेट दिस बिग सैलरी एंड देयर वर मेनी अदर फैसिलिटीज, पर्क्स आल्सो. उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे. He was working for 10 years in the same government job. ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था. And at that time, leaving a very good job with a good salary, सरकारी नौकरी छोड़कर कम, and then he had to join with a low salary, कम वेतन, and कम सुविधाओं वाले, and less perks,
in the university. Yeah, he had joining that university, the job of the university, विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला, the decision was a very करना हिम्मत का काम था. It was a decision for taken with courage. It was a brave decision. रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए. Raman left his job of this government job, and in 1917 he joined the Calcutta University as a professor over there in his job. नौकरी में job. उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी. यह सरस्वती means the knowledge. He wanted to give his time to a knowledgeable institute, and it was more important for him than the sukh suvidhaएं, means the comfort which he was having in his present job. So kahin adhik mahatvapurna, this was more important to serve the knowledge institute. कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे. In the university he gave all his time to study, research, and that all those all research work only he used to spend his time. 4 साल बाद, after 4 years, यानी सन 1921, in 1921 में इन समुद्र यात्रा मीन्स द सी वॉयज के दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम, जब रमन के मस्तिष्क में, व्हेन रमन्स माइंड में, इन रमन्स माइंड, समुद्र के नीले रंग की वजह, द रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ द ओशन, समुद्र मीन्स ओशन, द रीजन का सवाल हिलोरे लेने लगा. इट स्टार्टेड like provoking him. The question, सवाल हिलोरे लेना means the question started provoking him to do research of this. Why is this ocean blue color? तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किया. And then he did research work on this particular topic, जिसके परिणति means the result of which there came a Raman effect. रामन प्रभाव की खोज, the Raman effect was found के रूप में हुआ. It is in the form of Raman effect. A new खोज means a new invention was made. रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया. He studied that the effect of the sun rays on a solid and a liquid product, how it affects that, what difference it makes. प्रकाश पदार्थों means products, तरल means liquid, ठोस रवों, अनेक ठोस means solid products and liquid products. The prakash, the sunlight, sun rays, kiran means rays, के प्रभाव, what is the effect of it on those products. He made a study on that. उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है, तो गुजरने के बाद उसके वर्णन में परिवर्तन आता है. He studied that when a ray, एक वर्णीय रे प्रकाश, the ray of the sun, when it is falls on a liquid or solid product से गुजरती है, when it passes through it, तो गुजरने के बाद, after it passes through, how does it change after passing through a solid product or a liquid product? वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण, एक फोटोन, जब तरल या ठोस रवे से गुजरती है, वे उनके अणुओं से टकराती है, तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं. Now he found out that when the ray falls on something, on a solid or a liquid product, so the kiran ke photon means the photon of the rays, if it falls on a liquid or a solid product, it goes and
uh, like it gets it stops on the cells of it. गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिमाण स्व परि, परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं. Now this is talking about the electrons. The atoms alongside the atoms, the electrons move. So when any wave hits the atom, so it's some atoms gains electrons or loses electrons. Urja is the energy. So the atom gains energy or loses energy. दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्णन रंग में बदलाव लाती है. Now, the gaining energy also brings a change in the color, and losing energy also causes the change in the color. एक वर्णीय प्रकाश की किरण में सबसे अधिक ऊर्जा व्यंजनी रंग के प्रकाश में होती है. Now, kiran, the one ray of the sun, the maximum energy is in the violet color. The prakash में the violet color ray, the violet color light has the maximum energy, and after the violet color it is the blue color, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्णन का नंबर आता है. After the purple, after it is blue, then आसमानी is the sky blue color, then green, then yellow, then orange and lal and red. After this, these are the colors which gains energy. इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है. This is the and this type, the red light has the least amount of energy. एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्णन परिवर्तित हो जाता है. Now, when the rays or the radiations of the sun, when the rays gives out radiation, the amount of energy it gains or loses accordingly only the reflection changes. रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी. It was like a revolution. Raman's invention of in physics about this Raman effect, that was like a revolution. इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया. मीनिंग ऑफ दैट, इसका पहला परिणाम, the first result was, तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति, the light's nature of light के बारे में आइंस्टाइन के विचारों के का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया. What Einstein thought about the nature of light, so that the प्रायोगिक प्रमाण मिल गया, means the experimental proof was found. आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है. Before the Einstein's research, पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को the light was treated as the waves, तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के असमान है. But Einstein has said that the light is the speed of the atoms. इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की है और इन्हें फोटोन नाम दिया. Einstein had said that the light travels like a bullet, and he gave the name to it as photon. रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का
प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया. Now Raman had given a practical proof of Einstein's thoughts. Einstein's like what Einstein had told, that Raman's experiments had given a practical proof. क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्णन में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है. Now, Raman's effect has told, पर एक वर्णीय प्रकाश के वर्णन में परिवर्तन. वर्णन means the changes in the appearance. साफ तौर पर क्लियरली पर प्रमाणित करता है. इट प्रूव्स दैट कि प्रकाश की किरण, लाइट, द रेज ऑफ द लाइट, तीव्रगामी सूक्ष्म कणों, इट इज लाइक द एटम्स की प्रवाह, द मूवमेंट ऑफ द एटम्स, it में व्यवहार करती है, it behaves in the like movements in the atoms. रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया. Now when Raman's research was finished, that was the reason that the products, the substances, how the atoms react, और परमाणुओं की आंतरिक संरचना, what is the make of an atom, what is the construction of an atom, the study was very clear. पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था. यह मुश्किल तकनीक है. Before to find out the atoms in the travel of light, they used to use the infrared rays, infrared spectroscopy that was used. Yeah, but it was a difficult technique. और गलतियां की संभावना बहुत अधिक रहती थी. And there was a lot of chance of mistakes. रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा. Then when Raman had found out this invention, then to find out about the substances, atoms, and how it is made, his study was taken like Raman spectroscopy as his help, as a help to find out. यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्णन में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है. This gives a very clear information about how the atoms of each thing is made. इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया. After this effect, after the research of Raman, different substances could be easily detected in the laboratory and में करना तथा and अनेक उपयोगी पदार्थों means all other useful substances का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया. Like the appearance, the different objects could be easily created. Making man-made objects was substances had become very easy with the help of the Raman effect. रामन प्रभाव की खोज ने रमन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया. Now this invention made Raman to stand among the highest level of scientists. विश्व की चोटी में, the world highest level of scientists, in the line of those scientists, Raman was standing now. पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी से लगी रही. He got lot of awards. उन्हें सन 1924 में रॉयल
सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। In 1924 he was given the Royal Society membership. सम्मानित करना मीन्स ऑनर्ड। सन 1929 में उन्होंने सर की उपाधि प्रदान की गई। In 1929 he got the honor of the word sir before his name, सर वेंकटरमन। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार में से सम्मानित किया गया। एंड द नेक्स्ट ईयर ही गॉट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अवार्ड इन फिजिक्स नोबेल अवार्ड। ही वाज ऑनर्ड। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले। ही गॉट मेनी अदर अवार्ड्स एज वेल, जैसे रोम के मैथ्यूसी पदक, लाइक रोम्स मैथ्यूसी अवार्ड, रॉयल सोसाइटी का हु ह्यूज पदक, रॉयल सोसाइटी ह्यूज अवार्ड, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, द इंस्टीट्यूट ऑफ फिलाडेल्फिया, from there he got the फ्रैंकलिन अवार्ड, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार, रशियाज इंटरनेशनल लेनिन अवार्ड आदि एक्सेट्रा। सन 1954 1954 में रमन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एंड इन 1954 he got the भारत रत्न अवार्ड। This is the biggest, the most honorable award in India. वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। He was the first Indian scientist to get a Nobel Prize. उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। After him, not a single scientist have got this award of the Nobel Peace Prize for the in science. उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। And all these awards he got at the time when India was under the British rule. उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। When he was getting this honor, this respect, India had got a new self-confidence and self-respect. विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना का जागृत किया। And in the science world, in the area of science, he had given the birth to a new Indian curiosity, the awareness in science. भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। He was very attracted to the Indian culture. उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा आशुक्षुण रखा। He always had an Indian पहचान means he always had his Indian identity. He always kept it very. He always kept his Indian identity. अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावों को नहीं छोड़ा। After getting international प्रसिद्ध means when he became internationally famous, still he did not give up his South Indian attire. वे कट्टर शाकाहारी थे। He was a pure veg और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। He never drank any alcohol. जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। When he went for the Nobel Award in Stockholm, that time he showed the Raman effect on alcohol. He showed it. He practically proved it. बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित कर दिया, करने में कोई कसर नहीं छोड़ी,
तो रामन पर अल्कोहल का के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? Now, when he was offered alcohol after get doing the Raman effect on alcohol, he in a party after that in a party he was given alcohol. He was offered alcohol, but he refused. Then one of the hosts of the party said, रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. Means when Raman showed the Brahman effect on the alcohol and he convinced us, then तो रमन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? Then why don't we do the experiment of alcohol on Raman? The effect of alcohol on Raman. When Raman effect was shown on alcohol, then why not alcohol effect on Raman? Why he is not allowing to show that? रमन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था. रमन वॉज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू रिसर्च एंड स्टडीज. उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना भी थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे. ही वांटेड टू बी अ राष्ट्रीय नेशनल focus he had, and he wanted the science to become, he wanted to make science local or national, he wanted to bring science at national level. उनके प्रति समर्पित थी. समर्पित means offered, sacrificed. He wanted to progress it. He wanted to show the progress in science. उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे. He always remembered his early days. जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा. When he had to use that ordinary laboratory and then he didn't have any good facilities. He had lot of struggle. काफी संघर्ष करना पड़ा. संघर्ष में struggle. इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की. That is why he made a very good laboratory and a research center in Bangalore, कि जो बैंगलोर में स्थित है. It is in Bangalore. और उन्हीं के नाम पर है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट. And it is on his name only, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है. भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की. टू गिव फिजिक्स न्यू भौतिक शास्त्र में इन द फिजिक्स एरिया अनुसंधान का बढ़ावा मीन टू गिव an importance to the research. In India, he started a new magazine called Indian Journal of Physics. अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया. In his life, he had guided hundreds of students who were interested in research. जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया. And how like with one candle we can light up many candles. Similarly, उसी प्रकार similarly his research students and going further, they did a lot of good work. उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए. And among them only many students were on the highest positions. विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका भी संपादित करते थे. He also he was an editor of the magazine called Current Science. रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सीमित नहीं था. रामन इफेक्ट वॉज नॉट ओनली फॉर द लाइट रेज. उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश के किरणों से पूरे देश में आलोकित और प्रभावित किया. He had with his personality the light he shared with the whole country. उनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 के दिन बासी
बयासी वर्ष की आयु में हुई. He died on 21st November 1970 at the age of 82. रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे. रामन was the science and vision. He was an idol of that. उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें. He always had told, he gave a lesson that when we have to see our surroundings in the form of in a scientific way. We should try to find out the reasons behind the things happening in our surrounding. तभी तो उन्होंने संगीत के सुर ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले. That is the reason he found out in the music how the sounds and light travel. So he found out the reasons behind it. वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले. The principles, science principles he found, he invented. हमारे आस पास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं. Around us there are lot of things spreaded over जो अपने पात्र की तलाश में हैं. Who are waiting for to get found. Patra means who is going to research about them. जरूरत है रमन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की. We need to get a lesson from the Raman's life and to find out in the nature the hidden scientific secrets.